गुड आफ्टरनून टू ऑल। आवाज आ रही है मेरी? सभी को वॉइस आ रही? हेलो, वॉइस आ रही सभी को? सभी को वॉइस आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so last time 5 experiments have been discussed till now. Clear? Hello. Yes, sir. Okay, so 5 experiments आप लोग के डिस्कस हो गए हैं. Clear? And सर मिड सेम कब होगा? on your on tomorrow at 12 p.m. Clear? Okay. Okay, that will be shared your Google Classroom for 30 minutes. 30 मिनट का टाइम मिलेगा. Clear? So I think there is no class in between 12 to 12:45. Is it clear? Hello? आवाज आ रही Sir, है but सभी we को? have constitution class at that time. Which class? Constitution engineering. In the lunch session. Non-credit. Sir, lunch is at 12:40 to 1:45. Okay, okay. So you all are free na at that time 12:40 to 1:45. Yes, sir. Sir, we are not free at 12. We are free from 12:45 to 1:45. My point? Yes. Okay, okay. It will not take your 1 hour time. Only half an hour time will be taken off, and so I will assign at that time. Clear? At 12:40. So today we will discuss experiment number 6. Clear? Till 5th experiment discussion has been over. So 6th experiment होने के बाद जैसे first 3 experiment का वाइवा आपका हुआ था, and then this 4th, 5th, 6th will be the viva of 4th, 5th and 6th experiment will be on the next schedule. Clear? And midsem will be on tomorrow. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So okay, so I'm going to share you the file related to यहाँ manual भी आप लोग को लिखनी है. So I will share you the manual of that, and you may write. Clear? And send it to सर me. वर्चुअल लैब वाला से लिखना है कि आप जो भेजेंगे उससे लिखना है? नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा जो भी रेलिवेंट डिटेल है. ठीक है, बता दूंगा जो भी करना है आपको सेंड कर दूंगा मैसेज के थ्रू. Okay, so I'm just sharing you the file. Okay, is it visible? No, sir. Sure. Just sharing, this file is sharing. Okay, so up to 5th experiment is over. Like the 5th experiment was to write a program to initiate 8251 and check the transmission and reception of character. Okay, I have shown you the demonstration of that. Clear? So if any doubt will be there, so I today I will again show the video of that. Yeah. So today I'm going to share you the experiment number 6, demonstration of experiment number 6, and we have a YouTube video that is also available. So I will share you. So
The experiment is to find the largest and smallest number in an array of data using 8085 instruction set. Clear? So in this particular experiment, we will just find, as you know, we have an array of data. Clear? जैसे आप लोग सी प्रोग्रामिंग में होता है कि हम शॉर्टिंग मतलब अगर हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो इन एन एरे ऑफ डेटा, तो हम उसके लिए प्रोग्राम करते हैं. क्लियर? And track out the largest and smallest number. So in that similar way, we have the program for to find the largest and smallest number in an array of data for 8085 instruction set also. Clear? So this is this you may done on your virtual lab also and on kit base. So the lab demonstration is done on kit base. Clear? So I will show you the video of that. That is for fun. So just wait. I am just going to share you. Yeah, so video is getting started. Just wait. Okay, so okay, so we video share किया है मैंने, दिख रहा है सभी को ये? Is it visible? यस सर. Okay, so अभी इसको मैं प्ले करने जा रहा हूँ. ये एक्चुअली इसकी मैनुअल है. यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 5 दिख रहा होगा, लेकिन जो हम लोग का वर्चुअल लैब में जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ये 6 एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, तो नो मैटर ऑफ दैट, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका वही है. मैनुअल में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिखा हुआ है, बट इट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 6 अकॉर्डिंग टू योर वर्चुअल लैब एक्टिविटी. क्लियर? एक्चुअली वी हैव सफर्ड लिटिल बिट, हमने इसको थोड़ा चेंज किया था बाद में. क्लियर? सो देयर इज नो इशू. तो आप लोग ये वीडियो एक मिनट देखिएगा. मैंने वीडियो ये आपका है करीब 7 मिनट का. इसको जरा मैं रन प्ले करा रहा हूँ, सो देखिए. So hello dear student, now we will start with the experiment number 5. The objective is to find the largest oblique smallest number in an array of data using 8085 instruction set. So again we have the same kit, that is the microprocessor kit 8085 base. So you can see this is the kit again, on which we have also performed the previous experiments. The kit is same, and then we have the algorithm related to this. So you can see this is the algorithm for this. Now we have a program for this. So programming is also having the memory location, then hex code, then mnemonics are there. So we have start with the address location 2001 with the hex code 24, and the mnemonics is what? Load first number. Then load second number will be on 2002 memory location, that is having the hex code 28. Then 2003 is having hex code 90, which is the third number. The fourth number is 12, that is on the 2004 address. Then we use some instructions regarding 8085 and to execute the program basically for the finding the largest and smallest number in an array of data. So for this we have using the move command, MVI means move immediate, then we are having XRA, then LXI, then CMP means complement, JNC means jump to carry, jump with no carry, MOV means move command again, DCR is decrement, JNZ is jump with zero flag, ST is to accumulator, and then halt will be there. So if when we just we got the data that empty on the memory location 2100, this is the result. Okay, so now we are going to start programming. So
You can see. इस प्रोग्राम में मेमोरी लोकेशन 2001 से स्टार्ट है, तो हमने M प्रेस किया और 2001 टाइप करके एंटर बटन प्रेस किया। अब 2001 पे डाटा क्या है मेरा 24 टाइप किया, एंटर प्रेस किया। फिर टू क्या है 28, एंटर प्रेस किया। 3 पे क्या है आपका 90, एंटर प्रेस किया। फिर 4 पे क्या है आपका 12, एंटर प्रेस किया। फिर 5 पे क्या है 3E, एंटर प्रेस किया। फिर 6 पे आपका है 04, एंटर प्रेस किया। फिर 7 पे क्या है 4F, एंटर प्रेस किया। फिर 8 पे क्या है AF, एंटर प्रेस किया। फिर 9 पे क्या है आपका 21 टाइप किया, एंटर प्रेस किया। फिर आपका A पे क्या है 01, एंटर प्रेस किया। B पे क्या है 20, एंटर प्रेस किया। फिर C पे क्या है BE, एंटर प्रेस किया। फिर आपका D पे क्या है D2, एंटर प्रेस किया। फिर E पे क्या है आपका 11, एंटर प्रेस किया। फिर आपका F पे क्या है 20, एंटर प्रेस किया। फिर 10 पे क्या है आपका 7E, एंटर प्रेस किया। फिर 11 पे क्या है आपका 23, एंटर प्रेस किया। फिर 12 पे क्या है 0D, एंटर प्रेस किया। फिर 13 पे क्या है C2, एंटर प्रेस किया। 14 पे आपका है 0C, एंटर प्रेस किया। 15 पे क्या है 20 टाइप किया, एंटर प्रेस किया। फिर 16 पे क्या है आपका 32, एंटर प्रेस किया। फिर आपका 17 पे 00, एंटर प्रेस किया। 18 पे आपका 21 टाइप किया, एंटर प्रेस किया। फिर 19 पे आपका क्या है 76 टाइप किया, एंटर प्रेस किया। इसके बाद आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, नॉर्मल मोड पे आ जाएगी किट। फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम जी प्रेस किए और लोकेशन डालेंगे हम अपना 2005, क्योंकि 2005 से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे टाइप किया 2005। फिर उसके बाद हम शिफ्ट प्लस $साइन प्रेस किए, एग्जीक्यूटिंग लिख के आ गया। इस तरह एग्जीक्यूटिंग लिख के आए तो आप रीसेट बटन को प्रेस करिए और फिर इसके बाद अब आपको आउटपुट कहाँ देखना है 2100, किस लोकेशन पे 2100 पे। तो M प्रेस किए और 2100 यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आउटपुट मेरा 90 दिखा दिया, लार्जेस्ट नंबर मेरा 90 शो किया यहाँ पे। This is the largest number. If you again see, we have the numbers in the sequence, that is 24, 28, 90 and 12. So out of these four numbers, the largest one is the 90, which we have got on the display. You can see on the memory location 2100. So this is how we have performed the programming for the finding of largest number in an array of data using 8085. So thank you very much. बेटा सभी को ये वीडियो समझ क्लियर हुई अभी जो शेयर किया था? हाँ सर। ओके, अच्छा एक बात मुझे और आपसे बतानी है
ये आपके ये कॉलेज की ही लैब में डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है ये, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर लैब में ही ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है किट पे। सो according to the instructions we have been provided by the head of the department, if somebody want to come to the college and want to perform this virtual lab, oh sorry, lab on the kit, clear? Practically. Hello? Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी कॉलेज में आके इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहता है तो वो अपना नाम एंड एक मैसेज मतलब टाइप करके ये हमको भेज सकते हैं, ठीक है। if somebody interested to come into the college, so they may send their name and roll number and a message, typed message that you are not having any problem to come and you want to come to the college for the demonstration of this particular lab, clear? So आप आके यहाँ पे कर सकते हैं and I will provide you the schedule of that, clear? So accordingly you may come. So anybody of you is interested in this? Anybody of you? So there is no force upon anyone. So if somebody is interested, they may come. Clear? There is no force by to anyone. Clear? Otherwise, this method is going on. जैसे हम लोगों ने तो लैब में परफॉर्म किया ही है. That is sharing to all of you. But if somebody want to come, they may come. Clear? Yes, sir. Okay. तो आपको अपना नाम भेजना होगा इसमें ग्रुप में. हमको आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं. If somebody is interested, so I will share it to the head of department and accordingly the decision will be taken off. Clear? तो ये एक वीडियो हमने अभी आपको शेयर किया. नाउ आई हैव अनदर वीडियो ऑफ दिस, सो वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं. दैट इज वी हैव अ लिंक ऑफ दैट. ओके, so this link is given. I'm just clicking on this. Just wait, it will take few minutes to open. All of you are requested to kindly mark your attendance in this chat box. सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा. एंड सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, टुमारो एट 12:40 योर प्रेजेंस इज important, clear, on Google Classroom. Clear regarding midsem. Getting my point? सभी लोग को समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Trying to access, just wait. Okay, ये तो टाइम ले रहा है. अभी मैं इसको एक मिनट वेट करिएगा आप लोग.
Okay, so I'm just sharing you the file. Clear? I think we have the video. If data you need, yeah. So we'll just write a program to find the largest number in an array of data using 8085. So for this purpose, you need to get the array of data. From the array of data, you need to find the largest number. So how will you find the largest number in an array of data? We'll have a separate register for the largest number in the array, and we traverse the array through the program, assuming the first number. We compare the accumulator value and the first number. If the first number is greater than the accumulator value, we move to the accumulator. Similarly, we traverse the entire array and compare each number with the accumulator value. Once the number is larger than the accumulator value, we shift it to the accumulator and discard the present accumulator value which was previously stored. So we'll see how to program this. Clear the मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपका वही स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्लियर 8085 में, और ये आपका वर्चुअल लैब बेस्ड है. क्लियर? दिस प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट गिट बेस्ड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग रिटर्न है. क्लियर? दिस पोर्शन इज हैविंग द प्रोग्राम फॉर द finding the largest and smallest element of an array 8-bit 8085. So accordingly this will run. Clear? अभी देखिएगा इसमें सिमुलेटर पेज है जहाँ पे ये रन होगा. So just see. Clear? First of all, store the address in a register pair HL. That is, this provides you with indirect addressing of the address line 4150. Now get the count value, B registers for count value into the B register from 4150. Now increment H, that would yield 4151. So 4151, and next would be decrement B, that is, we are decrementing the count value by 1. If the count value was 3, it's decremented to 2, and you're getting the first data into the accumulator from the address location 4151, which is 4 here. Now, what you need to do is increment H, which becomes 4152, and now this particular instruction compares the accumulator value, which is 4151's value, which was 4, and memory value now is 4152, which is 2, and so accumulator value is 4 and 2. So 4 is greater than 2, so no carry is set. If no carry is set, then move on to this part 2. In part 2, you are decrementing B register value. B was previously 2, now it becomes 1. And increment H, so H becomes 4153 now. And jump on 0 to part 1. Here B is not 0, so jump on 0 to part 1. So that is B value is now 1, and compare a memory value and accumulator. Accumulator is 4 and memory is nothing but 4153. In 4153 you have the data value 8. So 4 and 8, 4 is less than 8, which becomes true. So carry is set. So this condition becomes invalid. And so we move on to this particular instruction. So the memory value is 8. 8 is moved to accumulator. And now again, this instruction is being executed. So B register is decremented by 1, that becomes 0, and H is incremented, and the jump on no 0 part 1. Actually, jump on no 0 part 1 is being evaluated, but in this case, this condition is evaluated for this above instruction. So what you need to do is, you need to put this DCRB instruction into cut this instruction, and you need to paste it over here, that is DCRB. So what this instruction will do is, it will check if the above execution of the above instruction sets the 0 flag or not.
That is, if B register value is 0 or not. If not 0, then it will move to part 1. If 0, it will come to this statement and store the largest number in the address location 41FF halt. So our data was in 415150, we are having is count value which is 3. In 4151 we have the first data 4. In second data in 4152 which is 2. In third address we have is 08. And 41FF we are having our largest number which is 8. So if you see a step-by-step execution. We have to move INXX to part 2. Yeah. So if you see a step-by-step execution of this process, then so you can see the count value and the first data we have got it already into the memory location. Now we are comparing and finding the largest number in an array. And once a number is found to be larger than the accumulator value, it's being stored into the accumulator. And we check for the count value. Once it goes to 0, we come to this particular instruction and store the largest number in 41FF address line and terminate the program. So if we move on to 41FF, our data was count value being 3 and data value being 4, 2, and 8. And so the largest number being 8. So in 41FF, we are supposed to have 8. Yeah, so our program is correct. So that's all with largest number in array. With smallest number in array of data, all that you need to do is you need to change one particular instruction, that is this instruction. That is, you jump on carry to part 2. That is, if carry exists, that is, if accumulator value is less than memory value, then move on to part 2. Otherwise, if there is no carry, then swap the values. So we'll see the execution of this instruction for the same set of data, count being 3 and the data set being 4, 2, and 8. And our answer should yield 2 in 41FF. So we'll just see that. Yeah. So in 41FF, the data value is 2, our data set being 4, 2, and 8. And this is smallest number in array. So that is about smallest number in array. You just need to change one particular instruction, that is JNC to JC, because once accumulator value is less than M, here accumulator being storing the smallest value, you need not swap when accumulator is already less than the current value. So that is about smallest and largest number in an array of data. हेलो, वीडियो समझ में आई आपको? ये सिमुलेशन वर्चुअल लैब पे किया हुआ है एक्सपेरिमेंट। हेलो, आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. दिस इज द वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो भी हम लोगों ने देखा था, जो पहले डेमोन्स्ट्रेशन था, वो आपका किट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो इसमें पहले इन्होंने जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया उसके लिए प्रोग्रामिंग करी, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर के लिए प्रोग्रामिंग हुई है। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर में एक ही कमांड हमारी चेंज हुई थी, इंस्ट्रक्शन जो भी इन्होंने भी एक्सप्लेन किया था, दैट इज जेएनसी एंड जेसी। जो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर में हम लोग जेएनसी यूज कर रहे थे, जंप विद नो कैरी, और इसमें जेसी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज एलएक्सआई, एमओवी, आईएनएक्स, डीसीआर, एमओवी, आईएनएक्स, ठीक है। एमओवी, ये सब जो है, डीसीआर, जो इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, एक नंबर जैसे हमारा डीसीआर जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है, नंबर्स को डिक्रीज कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ठीक है। कि आईएनएक्स से अगर हमारा एचएल पेयर में इंक्रीमेंट होगा, तो डीसीआर के थ्रू उसको एक साइड से डिक्रीमेंट भी हमें करना होगा, ठीक है। 4 5 3 2 1 इस तरीके से, ठीक है ना। लास्ट में फिर यहाँ पे वी आर यूजिंग जो हमारा रिजल्ट आएगा, दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, दैट इज एसटीए command is there, then we have halt for the execution of the program, ठीक है। और इसको आप सिमुलेट करा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भी, और या फिर
एट मतलब एक ही बार में इसको सिमुलेट कर सकते हो। तो जैसे अभी स्टेप बाय स्टेप सिमुलेट कर रहे थे तो सारी काउंट वैल्यूज यहाँ लेफ्ट में दिखाई दे रही थी, ठीक है। वन बाय वन मीन्स वन लाइन बाय वन लाइन जो है ये एग्जीक्यूशन हो रहा था इसमें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दिस वाज द exactly the programming for the largest and smallest element of an array for the 8-bit 8085, clear, to find the largest and smallest element of an array, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? इज इट क्लियर? ये सभी को समझ में आ गया जो भी हमने समझाया? ये किसी को इसमें किसी को डाउट? ओके, तो इसके बाद देखिए जो now we have the time, now we can access the next lab also, that is next experiment also, that is write a program to show the use of int naught and int 1 of 8085, clear? तो आवाज मेरी आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. ओके, सो इससे पहले हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, वी कैन डू दिस विद राइट ए प्रोग्राम ऑफ फ्लैशिंग एलईडी कनेक्टेड टू पोर्ट 1 ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, क्लियर। सो पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेंगे जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, देन वी कम टू एक्सपेरिमेंट नंबर 7, ठीक है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द वीडियो ऑफ अगेन, ये आपका लैब में ही परफॉर्म होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। Before entering to the experiment number 7, here we will enter to the experiment number 8. ये हम आपको करा दे रहे हैं, इसके बाद ये वाला हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो write a program of flashing LED connected to port 1 of the 8051 microcontroller, clear? So just sharing you the file. Wait. Hello dear student, now we have the experiment number 7. तो शेयर कर देता हूँ मैं फाइल। इसको देखिएगा, ठीक है, शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो। That is based on the microcontroller basically. The objective is to write a program of flashing LED connected to port 1 of the microcontroller. Clear? So we will just write a program for the flashing LED to means LED will get flashed if it is connected to port 1 of the microcontroller. So this you can see, this is the program basically. Now this is the circuit for this. You can see this, we have a 8051 microcontroller in the block basically. We have the ports P1.0 and P3.3. So P3.3 is connected to the switch, and P1.0 is basically connected with a resistance of 330 ohm, and it is again connected with the positive terminal is connected to the resistance and of the LED, and the negative is to the reference node. Here, so and if you see, this is the microcontroller kit basically. So it is exactly NVIS 5000A8051. That is the microcontroller. You can see in this microcontroller, it consists on the board. It consists basically, this is the keyboard from where we perform the typing of the instruction. This is the display where you can see the outputs also.
whatever we are typing over here. This is what toggle switch. If you turn it on the upper mode, it will connect it with the PC, and if it is suppose downward mode, so it is now connected with the keypad mode. Means when if you perform if you perform the instruction through the computer or PC, then you will turn it on the PC mode. So now this is the USB, you can see, where you can connect it through the laptop or through some other computer device to give the instructions. Now you can see this is the supply. The power supply is exactly plus 12 volt DC. You can see we have the DC supply of plus 12 volt, then plus 5 volt, then minus 12 volt and minus 5 volt. This is the reference terminal where we perform the ground connection. Now this is the microcontroller basically. Sorry, this is the IC. You can see this is 40 pin IC, and microcontroller unit is there, 8051 family. And then we have some ports like this. You can see this is port 0, port 1, port 2, port 3. Yeah. Now we just going to start the demonstration of this, how we can get the flashing LED. The LED will get flashed when it is connected to port 1. So you can say this is the resistance of 300 ohm. And this is connected with the port 1, as we have seen in the objective. Is connected with the port 1, and the second terminal of this LED, that is the negative terminal, is connected with the ground, that is the reference terminal. Now starting the demonstration. Just देखिए इस प्रैक्टिकल में जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनर किट की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनर किट है 8051, और ये एटमल करके 8051 ये आपकी आईसी है। ठीक, आपका ऑब्जेक्ट है फ्लैशिंग एलईडी। ठीक, तो ये आपकी एलईडी है। एलईडी में दो लेग हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव लेग पे हम 330 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं और नेगेटिव लेग को हम ग्राउंड कर दिए हैं। ठीक, ये कनेक्ट हो गया। अब आपका एक मिनट सर, ये निकल जा रहा है। ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक, इसमें कुछ चीजें आपको बेटा सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन और होने वाला है। इससे वीडियो मैं आपको पूरा क्लियर कर सकूं। ठीक है।